हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट आर द ब्रांचेस एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, study of small microorganism and their effect on human body. This organism cannot be seen naked eyes. Microorganisms, being extremely smaller, can be visualized only under a microscope. The word microbiology is constituted by microbe and biology. Microbes are the organism. Too smaller, it can not be seen by naked eyes. Biology is the science that deals with the study of animal and plant life. The term microbe is now replaced by the term microorganism. Introduction of microbiology. Microbiology means it is the study of microorganism. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म का इफेक्ट हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में। अगर वो ह्यूमन बॉडी में अगर एंटर कर देता है ये माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो क्या इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है बॉडी में। एज वेल एज ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको हम अपने आईज से नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉलर। इसको हमको विजुअलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बना हुआ है टू वर्ड से, दैट इज माइक्रोब एंड बायोलॉजी। माइक्रोब मीन्स इट इज अ ऑर्गेनिज्म दैट इज वेरी स्मॉलर, दैट इज ओनली विजुअलाइज्ड अंडर माइक्रोस्कोप। बायोलॉजी मीन्स होता है साइंस जिसमें डील्स किया जाता है स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ को। द टर्म माइक्रोब को अब रिप्लेस कर दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। दैट मीन्स द टर्म microbe is now replaced by the term microorganism. The term microbiology was introduced by a French chemist Louis Pasteur, who demonstrated that fermentation was caused by the growth of bacteria and yeast. He is known as father of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर के थ्रू, और उन्हें यह भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसे होता है। लुइस पास्चर इज आल्सो known as father of microbiology. Microorganisms are present everywhere on earth, including human beings, animals, plant, soil, water, food and atmosphere. Microorganism may be beneficial or harmful to human beings. Microorganism जो है वो everywhere present है, including human beings, animal, plant, soil, water, food, atmosphere, environment. Microorganism जो है वो सभी जगह present है। ये microorganism बॉडी के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए ये बेनिफिट भी है और हार्मफुल भी है। एज वेल एज इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैन नॉट बी सीन इन आवर आईज, they only seen under the microscope. What is microbiology? Simple meaning, study of microorganism or microbes. The study of microorganism or microbes is known as microbiology. Definition. Definition of microbiology. Microbiology is the science which deals with the study of microorganism. Microbiology is the science which deals with the study of microorganisms. Microorganisms are bacteria, virus, fungus, yeast, that all microorganism. What are the types of microorganism? अब हम देखते हैं types of microorganism. Types of microorganism including bacteria, fungi, algae, protozoa, nematodes, helminthes and viruses. That all types of microorganism. Bacteria, fungi, algae, protozoa, nematodes, helminthes and viruses. देन इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेलुलर भी होते हैं और ए सेलुलर भी होते हैं। सेलुलर मीन्स दे आर मेड अपॉन सेल्स, ए सेलुलर मीन्स दे which is not made upon any types of cells, that is a acellular.
सेलुलर जो है हम दो टाइप्स के देख रहे हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. Unicellular, so many microorganisms are unicellular as well as multicellular. एग्जाम्पल्स के लिए हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल्स के लिए हम देखते हैं कि वो फंगस जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं. बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो फंगस होते हैं. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में ये डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं रहता है, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक. बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो प्रेजेंट रहता है, दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स. अब हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें से कौन सा सेलुलर है और कौन सा ए सेलुलर है. आप देख सकते हैं जो बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, nematodes and helminthes, that all cellular microorganism. और what is the acellular? Only viruses जो होते हैं वो acellular microorganism होते हैं. Cellular microorganism, that means bacteria, fungus, algae, protozoa, nematodes and helminthes, ये सारे जो होते हैं वो सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. बट ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से इंक्लूड होते हैं? ओनली वायरस जो है वो इंक्लूड होता है. Branches of microbiology, it is a two types, the basic or pure science and the second one is applied science. Branches of microbiology, it is categorized to basic or pure science and the second one is applied science. Branches of microbiology, it is two classification, basic or pure microbiology and the second one is applied microbiology. Basic microbiology, it includes all types of microorganism. First, bacteriology, mycology, protozoology, algology, parasitology, genetics and immunology. That is all. The basic microbiology, it is related to all types of microorganism, that is bacteriology, mycology, protozoology, algology, parasitology, genetics and immunology. And the second classification, your second branch of microbiology, that is applied microbiology. It includes medical microbiology, pharmaceutical microbiology, industrial microbiology, food microbiology, soil microbiology, agricultural microbiology, aquatic microbiology, air microbiology, and last one is that is epidemiology microbiology. That all the branches of microbiology, basic and pure microbiology, and the second one is the applied microbiology. Basic and pure science in that include first bacteriology. Bacteriology means it is the study of bacteria. Yeah, it deal with the study of bacteria. Mycology, that means the study of fungi. Yeah, it deal with the study of fungus. Protozoology, it is the study of protozoa. Yeah, it is deal with the study of protozoa. Algology, it is the study of algae. Parasitology, it is a study of parasites. Genetics, it is a study of hereditary and variation. Then last one, that is the immunology, it is a study of immune system, a study of mechanism involved in the development of resistance by body to infectious disease. That means immunology means it is the study of immune system as well as जब कोई infectious या कोई इन्फेक्शन या कोई एंटीजेंस बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी जो है वो क्या रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता है, दैट इज द इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. देन बेसिक और प्योर साइंस इंक्लूड बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, एल्गोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड द लास्ट वन इज इम्यूनोलॉजी.
Then second one, applied science. In that include medical microbiology, pharmaceutical microbiology, industrial microbiology, food microbiology, soil microbiology, agriculture microbiology, aquatic microbiology, air microbiology, and the last one is epidemiology microbiology. Medical microbiology, it deals with the study of positive agents of infectious disease in human beings. Medical microbiology has close links with other disciplines such as pathology, clinical medicines, pharmacology and therapeutics. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मोस्ट कॉमनली जो स्टडी करते हैं दैट इज अ कॉजेटिव एजेंट। कौन से जो इन्फेक्शियस डिसीज है, कौन सा कॉजेटिव एजेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है उस डिसीज के लिए। देन जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है इसमें हम और भी जो कुछ जो फील्ड है उसके बारे में जो है वो हम स्टडी करते हैं, लाइक पैथोलॉजिकल, क्लिनिकल मेडिसिन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी for the tuberculosis is the infectious disease and the causative agents that is a mycobacterium tuberculosis। तो ये सारे जो कॉजेटिव एजेंट्स है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं दैट इज अ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। Pharmaceutical microbiology, it deals with the study of microorganisms which are responsible for the production of antibiotics, enzymes, vaccines, vitamins, and other pharmaceutical substances. It also includes the method of sterilization and disinfection, microbiological testing of pharmaceuticals, sterile product, preparation and diagnosis of disease and treatment। फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में मेनली हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एज वेल एज एंजाइम, वैक्सीन, vitamins and other pharmaceutical substance। Pharmaceutical microbiology, it is also include the methods of sterilization as well as the disinfection, then sterile product preparation, diagnosis of disease as well as treatment, all the things include in the pharmaceutical microbiology। Food microbiology, it deals with the interaction of microorganisms and food in the relation to food processing, food spoilage, foodborne diseases, their prevention, and includes preparation and preservation of food products। फूड माइक्रोबायोलॉजी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के जो प्रोसेसिंग है, फूड स्पॉयलेज जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, कौन से ऐसे जो डिसीजेज है जो फूडबॉर्न डिसीजेस में इंक्लूड होते हैं, जो प्रिवेंशन एज वेल एज प्रिपरेशन एज वेल एज द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं दैट इज द फूड माइक्रोबायोलॉजी। The next one, soil microbiology. Soil microbiology is the study of organisms in soil that affects its physical and chemical properties, especially microorganisms like bacteria, fungi, protozoa, and viruses. These microbes play a critical role in soil health, plant growth, and the environmental। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में मेनली ये देखते हैं कि कौन कौन से जो है अफेक्ट कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेनली जो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और वायरसेस जो है इंक्लूड रहते हैं। एज वेल एज ये माइक्रोब्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं फॉर देयर सॉइल हेल्थ, प्लांट ग्रोथ एज वेल एज देयर एनवायरमेंट। Industrial microbiology, it is the study of industrial useful microorganism in the production of alcoholic beverages, vitamins, amino acids, enzymes, antibiotics, and other drugs। It also includes fermentation techniques for the production of different compounds। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में मेनली इट इज यूजफुल करते हैं प्रोडक्शन ऑफ जो बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेज हैं, vitamins हैं, एमिनो एसिड्स हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स एंड अदर ड्रग्स। Isolate in that the industrial microbiology also include the fermentation technique for the production of different compounds। जो हम बहुत सारे ऐसे जो compounds या बहुत सारे ऐसे products यूज करते हैं जो fermentation के थ्रू जो है वो बनाया जाता है, जो फर्मेंटेशंस के थ्रू जिसका प्रोडक्शन होता है, दैट ऑल थिंग्स के बारे में जो पढ़ा जाता है दैट इज ए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी।
The next one, agriculture microbiology. Agriculture microbiology is a branch of science that studies the role and activities of microorganism in agriculture system. The study of beneficial and harmful microorganism in soil, plants and animals with the goal of improving agricultural practice and promoting sustainable food production. Agriculture microbiology, that means it is related to agriculture, as well as it is a very important for the agriculture system. This is a system in that the agriculture microbiology, it is very harmful as well as the benefit, that all the microorganism, कुछ ऐसे microorganism है जो agriculture के लिए benefits है और कुछ ऐसे microorganism है जो agriculture के लिए harmful होते हैं. That all the agriculture microbiology. Aquatic microbiology. First of all, what is the meaning of aquatic microbiology? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, जो मोस्टली जो है रिवर या लेक्स पे रहते हैं. इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटी इन द फ्रेश एंड मैरिन वाटर इंक्लूडिंग लेक्स, rivers, bays, and seas. It also includes water purification, microbiological examination, and biological degradation of waste. तो जो एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लेक पे, रिवर पे, बेस पे एंड सीज पे जो प्रेजेंट रहते हैं, मेनली यूज किए जाते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के लिए एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम रिसाइकल करते हैं. एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया या फंगस को ब्रेक डाउन किया जाता है और ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलर सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या बायोमास. ये जो प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस, दैट इज अ नेचुरली हैपेंड. दैट इज अ एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी. Next one, air microbiology. It is deal with the spreading of plant and animal diseases through air. Air microbiology, also known as aeromicrobiology. It is the study of microorganisms suspended in the air. This airborne microorganism, also called bioaerosols, include bacteria, fungi, viruses, and other microbes. Air microbiology is important for understanding the spread of airborne diseases, improving indoor air quality, and controlling microbial contamination. एयर माइक्रोबायोलॉजी का दूसरा नाम है एरो माइक्रोबायोलॉजी, या जिसको हम पे बायो एरोसॉल्स के नाम से भी जाते हैं. एयर माइक्रोबायोलॉजी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर के थ्रू जो है इन्फेक्शियस डिसीज जो है प्रोड्यूस करते हैं, या एयर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जैसे पढ़ते हैं स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न डिसीजेस. एयरबॉर्न डिसीजेस में ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, पर्ट्यूसिस जिसे वुपिंग कप बोलते हैं, ये सारे जो है एयरबॉर्न डिसीजेस हैं जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है बॉडी को वन पर्सन से दूसरे पर्सन को ये इन्फेक्शियस जो है प्रोड्यूस करते हैं एयर माइक्रोबायोलॉजी में. Epidemiology, microbiology. The application of epidemiology principles to understand the pattern, causes, and control of infectious disease caused by microorganisms like bacteria, viruses, and parasites. It is a cornerstone of public health, providing the evidence basis for policies and programs designed to protect communities from infectious disease. एपिडेमियोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी में मेनली हम ये पढ़ते हैं कि हम कौन से कॉज या कंट्रोल से इन्फेक्शियस डिसीज को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसके थ्रू हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. ये कोई भी जो पब्लिक हेल्थ का ये कॉर्नर स्टोन है एपिडेमियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, जो एविडेंस बेस्ड जो है वो पॉलिसीज और प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज के लिए. That all microbiology, introduction of microbiology, definition, meaning, types of microbiology, as well as the branches of microbiology.